Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is your boy Jeebak. So today we are gonna do an unboxing and a product review for another famous product. ठीक है? And I have heard really amazing reviews about it. बहुत सारे YouTubers इसको use करते हैं and it's considered as one of the best microphone. Especially अगर आपको ऐसे बैठ के वीडियो बनाना है, it is considered as one of the best microphones. You'd be wondering, right? Which microphone am I talking about here? So it is none other than BOYA by M1 microphone. ठीक है? ये बहुत लोग यूज करते हैं and मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया बट मैंने बहुत सारे अच्छे रिव्यूज देखे हैं. तो आई एम गोना ट्राई इट माई सेल्फ एंड शो यू गाइज एज वेल हाउ गुड दिस माइक्रोफोन है. तो हम लोग इसके ऑडियो क्वालिटी को टेस्ट करेंगे एंड ऑल्सो विल सी व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स. विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो. So yes guys, you can see here this is the BOYA by M1 lavalier microphone and पता नहीं आंटी इधर खड़ी है कॉलर में माइक डाल के, ऐसे सेम इधर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो. इट इज फॉर स्मार्टफोन्स, camcorders, DSLRs, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PC एक्सेट्रा. तो दिस इज द माइक्रोफोन. इधर कुछ डिटेल्स हैं बट या वी रियली डोंट केयर अबाउट दिस डिटेल्स. ऐसे फीचर्स हैं बट या अंदर क्या है देखते हैं. मेरे को खोला नहीं है. तो ये रहा एक नाइस 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 नाइस. वाओ, इसको हम लोग, ये हो गया खत्म, बाय जाओ ब्रो, नहीं चाहिए. तो ये रहा. ओके, सो फर्स्ट वी हैव हियर व्हाट इज दिस. आई थिंक या दिस इज अ वारंटी कार्ड. ये क्या करिए बोया, ओह इट इज सम क्वालिफाइड सर्टिफिकेट. ठीक है, समथिंग डजंट मैटर. तो उसका हो गया. देन वी हैव द यूजर मैनुअल. ओके, कैसे माइक को यूज करना है, कनेक्ट करना है. आई थिंक सब कुछ इधर दिया हुआ है. चाइनीज पढ़ने आती हो तो आप चाइनीज भी पढ़ सकते हो. पता नहीं चाइनीज ही है ना, जापानीज तो नहीं है, चाइनीज लग रहा है बट या वो कैस. ओके, तो ये आया एक पाउच. Oh, this pouch, अच्छा पाउच है. इट फील्स लाइक अ लेदर पाउच, गुड क्वालिटी पाउच. इधर बोया का ब्रांडिंग दिया हुआ है. ओके, एज यू कैन सी बोया का ब्रांडिंग. एंड लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड. ओके. ओह हाँ भाई, दिस इज द माइक. ओह माय गॉड, लुक एट द लेंथ ऑफ दिस वायर. भाई बहुत लंबा लेंथ है. माय गॉड, seriously, this is wire quality. If I say it's normal quality wire, but it is pretty decent. ये this is the microphone. This is the, मैं ज़रा focus कर लेता हूँ. This is the microphone. You can see this is omnidirectional, तो ये पूरे सराउंडिंग साउंड को रिकॉर्ड करता है. और या इफ यू लुक एट द वायर लेंथ, भाई साहब दिस इज प्रिटी ह्यूज, लाइक वेरी लॉन्ग. तो अगर आपको ऐसे दूर बैठ के वीडियोस बनाना है और इफ यू वांट टू कनेक्ट इट टू योर DSLR और स्मार्टफोन, दिस इज अ गुड चॉइस. इज प्रिटी गुड चॉइस. और इधर आप देख सकते हो, you can see बोया का branding and yeah, you have two options here for smartphone and for cameras. अगर आप कैमरा के साथ रिकॉर्ड कर रहे हो, so you will have to put a cell inside it is what I heard, and that they already provided the cover. So yeah, if you're using it in a smartphone, you don't have to put any cell in it, but if you're recording through a camera, you have to put a cell in it. आपको दिखा दो कहाँ डालना है. ये रहा. तो हाँ, so this is where you put the cell when you're recording in DSLR or camera or anything of such sort. तो इधर आपको एक पिन मिल जाएगा डालने के लिए. आपको पैंट में डाल सकते हो या कहीं भी जो जहाँ डालना है डाल लो. So and then we have this. Okay, this, oh nice. So if I open this, ये तो मिल गया फिल्टर. तो इससे you put this, 1 second I'll show you. तो ये आप इसके ऊपर डाल सकते हो, तो इसके अंदर डाल सकते हो एंड यू कैन रिकॉर्ड. सो इट विल हेल्प फिल्टर द नॉइस अराउंड यू. ठीक है, नाइस. विद दिस एंड देन वी हैव अ क्लिप. ओके, हाँ, दिस इज द कॉलर क्लिप. ये आप कॉलर के अंदर डाल सकते हो. ठीक है, यू कैन स्टिक इट इन योर कॉलर और पिन इट इन योर कॉलर and you can use these microphones. Okay, that is done. Then we have a cell. Acha, they're giving us a cell, they're giving us a clip, they're giving us a NAR filter. Pretty decent man, pretty decent, especially for the price range. Amazing. And this is a connector. तो अगर आपको किसी टीवी या एक्सटर्नल आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है, you can connect it since it's a 3.5 mm jack. As you can see here, you can just put it in and yeah, connect it to any PC, TV or जहाँ भी चाहिए कर लो. Okay, and pretty decent for the price. You have these many items inside the packet. And now let's move on with testing the audio quality. Okay, cool. The voice that you're hearing right now is from my smartphone, so you can see the difference between the upcoming clips and this clip right now.
So let's move on to the next clip with Mayono AU-A03. अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो, you are hearing it from Mayono AU-A03. This mic here, which I am using right now. और अगले क्लिप में आप देखोगे कि BOYA by M1, how does it sound? So right now I'm recording from BOYA by M1 microphone. So you can see the difference between all three clips only if you're wearing earbuds or earphones or headphones or anything. अभी आपको ऑडियो क्वालिटी में डिफरेंस समझ आएगा. So I would suggest you do that. अभी तक मैंने ये क्लिप देखा नहीं है, so once I watch the clip I'll give you a small overview. तो I will see you guys soon. So, okay. After reviewing the clips, I am back here and आपने भी clips देख ही लिए होंगे and you would see the difference in the audio quality, right? Since it's an omnidirectional microphone, yes, it records the surrounding sound, which is an advantage and a drawback. I felt audio quality is really good, but since it's captures the surrounding sound like गाड़ी जा रही है या मम्मी कुछ कुक कर रही है, कुकर बज रहा है, ये सब का आवाज़ भी आएगा. बट वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज सॉफ्टवेयर लाइक ऑडेसिटी टू कैंसिल आउट द बैकग्राउंड नॉइस. इट्स वेरी सिंपल. कभी मैं अपना वीडियो बना के डाल भी दूंगा, सो यू गाइज कैन डू इट एज वेल. ऑडियो क्वालिटी वाइज एंड फॉर द प्राइस रेंज आई फेल दिस माइक्रोफोन इज रियली गुड एंड स्पेशली इफ यू आर समवन who's like बैठ के वीडियो बना रहे हैं, इट इज़ रियली रियली गुड क्योंकि आप कितना भी दूर बैठ सकते हो क्योंकि वायर लेंथ इज ह्यूज. बट इफ़ यू आर अ डेली ब्लॉगर, इफ़ यू आर समवन हु मेक्स अ लॉट ऑफ व्लॉग्स, आई वुडंट सजेस्ट दिस बिकॉज जो वायर का लेंथ है बहुत इरिटेट करेगा आपको. इट इज़ वेरी लॉन्ग. आप खरीदोगे तो आपको पता चलेगा इट्स वेरी वेरी लॉन्ग. तो जो माइक टांगा हुआ है उधर से अपना जो कैमरा है या DSLR है उधर तक एक लंबा सा वायर जाते हुए दिखाई देगा, विच इज़ नॉट वेरी प्लीजिंग. So for vloggers, I wouldn't suggest this, but if you're someone who makes videos like this, it is a really good microphone. Little bit of editing is required, but it doesn't take much of an effort. तो अभी के लिए बस इतना ही. This is what I had to cover. And if you like the video, give it a thumbs up, subscribe for more content, and share the video as much as you can. Hit the bell icon, and I'll see you in the next video.